Students, let's move to the question number 5. The fifth question here is, why did the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stayed in cave Hira? स्टूडेंट, यहाँ पे राइटर हमसे पूछना चाहता है कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव हिरा में, गारे हिरा में जाके अपने दिन और रातें गुजारते थे. So basically, if we go through the paragraph number 4, we can easily answer this question that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stayed in cave Hira for meditation and in remembrance of Almighty Allah. He loved to be in solitude and he loved to remember Almighty Allah in solitude. So basic purpose आपका ये था कि आप गारे हिरा में अकेले जाएं, वहां पे इबादत और रियाजत में मशगूल रहें. तो इसलिए आप गारे हिरा जाते थे ताकि आप अल्लाह ताला की अकेले में इबादत कर सकें. आई होप आई आंसर द क्वेश्चन.